So, hello everyone. First of all, I would like to welcome you all on behalf of Platform Tech Group of PUSSGRC Hoshiarpur. Platform is the only official technical group of PUSSGRC which is financially independent. Having said that, I would also like to mention that Platform has a very strong alumni base with our super seniors being placed in all the big companies like Cisco, Yellow.ai, Amazon, Paytm, to name a few. Platform also holds the record of 100% placement and the highest package from the college every year ever since this group has formed. Platform helps its members with web development, competitive programming, graphic designing, business development, and much more. So, with this, we'll move towards Shubham Das sir, who is our guest today. He was also a part of Platform Group and the student coordinator. He is a 2021 pass out and is currently pursuing his MS from IIT Madras in computer science. So, I would like to ask him to kindly brief us about his experiences with Platform and also share with us some tips to crack the GATE exam. Over to you, sir. Thank you. Yeah, thank you, Yashi, for such a nice introduction. Uh, so, uh, I am a 2021 batch pass out student, and I'm currently pursuing my master's from IIT Madras. So, I will share some of my experience from this college so that you juniors can have some learnings, take away some learnings from my experience. So first of all, uh, when I came to college, like I was very much a beginner. I didn't know anything. My JE rank was also not very good. Uh, but okay, I had some interest in computer science, so I took admission in computer science in this college, and after that I started like exploring all the options what I can do. But somewhat in my mind there was like I wanted to go to IITs. So IIT is one of the premium institute in this country, and being an engineer I like wanted to pursue my masters from IITs. So I was like pretty much clear that I want to go to IIT, get into IIT. That's it. So I started exploring options that how can I, like, how can I get into IITs? Like I massively failed in JEE Advanced, so that uh, failure I was like overcoming from that already. So I searched, and back then at that time there was like no such massive information available on YouTube and all like today. So I searched on Google and I figured out that GATE is an option. Through GATE you can do your masters in IITs. So like I thought that okay, let's give it a shot. Let's try GATE. Okay, so I downloaded the syllabus, and like I knew nothing. I was very weak in maths also, so I downloaded the syllabus and I just go through the syllabus, and I tried to match the GATE syllabus with my college curriculum and found out that many things are common between the two. Then I decided that okay, so it if I prepare for GATE, then it will also help me in the academics to cope up with the academics in my college also. So okay, so I started researching about how to prepare GATE and all. Back then in YouTube there were no such major informations,
but I searched on Google. I joined some of the communities like how to prepare for gate and all. Then I came to know that for clearing the gate exam you have to very thorough with the core subjects of your stream. Like I was from computer science, so I had to be very much clear with the concepts of my core subjects. So what I thought is that with the semesters, like many things in the college syllabus and the gate syllabus are common. So I thought that why not prepare it with college only. Okay, so what I used to do is each semester I point out the subjects which are common with my semester exams and the gate exam. Okay, so I used to study each subject on gate point of view, like not for passing the college semester exams. I tried to uh, prepare the subject in such a way that the concepts are very much clear, and I used to make notes. And I like in once you prepare for gate, the best thing is that the semester exam will be a cakewalk for you, right? So I started doing these things, and yeah, as I said, my JE rank was very very horrible. So I had no background, no mathematical background as such. So it take me like 1 to 2 years to revise those things which are prerequisites for gate, right? So some basic maths and yes, some basic aptitude and maths. That's all. After that, I from second year I started. I think seriously preparing for gate. I used to make notes on each subjects, and uh, lockdown helped me a lot because at lockdown I got pretty much time for preparing new subjects and for revising my old subjects and all. So yeah, for after that I gave the GATE exam and cracked it. Like it was tough, but yeah, it was okay. And finally, I'm in IIT Madras. I'm doing my masters. So that's a brief about my journey. So you Thank you guys so much, sir. can post questions on comments. I will try to answer all the questions. Let's keep it interactive only. Uh, yeah. Yes, sir. Thank you so much, sir. This was, I guess, really, really helpful for all of us to present over here. So, with this, we'll move to Mr. Chandan Bansal, who is the current CEO of Platform. And he's a 2022 pass out and is currently placed in Paytm. So, over to you, sir. So, hello everyone. Thank you for the introduction, Yashi. As you all know, that currently I'm placed in Paytm. I am hired as an intern there. So, like there are, if any of you has any SD related questions, and any of you are in the software development in the technical field, you want to pursue it further, you can direct it to me. And speaking of my journey, uh, when I was in the first year, I I was cleared up like I have to go in technical field only. So I started exploring the fields. In first year, I gave all of the time to exploration only, like cloud computing and machine learning, deep learning, and graphic designing, digital marketing. I explored all these fields and software development too, of course. So during the time of my exploration, I met with this group, Platform Tech Group. So I became its member, and slowly, I began to walk on the path of my seniors. Like they were also going to be software developers, and some of them doing really well in Merns Tech field. Merns Tech is a technology set. So yes, so I started pursuing those fields, and then in coming into second year, I took some offline training in Java and Python from Chandigarh. So that was most
probably it was covering my 2 years journey. I started programming back in the first year only. From, let's say, if you want to ask about some sources, then Let Us See was a book that came back then, and I started learning from that book. And also there was a YouTube channel. One second. Yeah. So Saurabh Shukla was its name. So that was also pretty much informative, and you many of you have already heard about that channel. So that was the 2 years journey. And after coming into third year, I I did an internship. So that also helped me sharpen my skills, and then I started preparing for interviews. I started giving interviews in like any company that was posted over Internshala. So that was pretty much about the 3 years. Uh, I would also suggest you that you should keep on giving interviews that would boost up your confidence in the interviews. And yes, so that was it. Thank you so much, sir, for sharing your experiences. Now, with this, we'll move to our next part, that is the Q&A session. For this, I would like to call Uday, sir. Over to you, sir. Hi, I'm audible, I guess, now. So, hello to everybody. And today we have so much precious guests with us. One is in IIT Madras and one is placed in Paytm. Both are all alumni and both are a part of platform. Both were a crucial part of platform, and we had a great bond with each other. So, hello Shubham sir and hello Chandan sir. It's great to hear from both of you. I have some of questions for you from you. So I'd like to ask them. So the freshers, the first years and the second years could benefit from both of you. So my first question for that is common for both of you. First, anybody can reply. So first question is that how was the journey from first year to third year of college? Like in the first 3 years, and were you always clear in your path in the first 3 years, or how did you explore what you wanted to do, and what would you suggest that for those who are not clear in their path, right, in the first 3 years? Okay, so I'll take up this question first. Uh, Yeah, so I think students are asking to speak in Hindi, so I will. no Okay, problem. Hindi. I'll speak in Hindi, so that everyone can understand. तो या तो मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था कॉलेज, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए था। तो इन फर्स्ट सेमेस्टर आई लाइक मैंने कुछ ज़्यादा अपने हार्ट को टारगेट सेट नहीं किया। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाज फॉर एक्सप्लोरेशन ओनली। तो मैं सबको रिकमेंड यही करूँगा कि फर्स्ट सेमेस्टर आप आराम से सब कुछ एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप सीएसई से है तो यू कैन एक्सप्लोर कोडिंग एंड व्हाट आर योर इंटरेस्ट। इफ़ यू वांट सम अदर थिंग टू डू लाइक इंजीनियरिंग नहीं करनी, नॉन कोर जॉब में जाना है, ठीक है, तो बिजनेस प्रोफाइल्स में जाना है, तो बहुतों का बहुत टारगेट्स रहता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट सेमेस्टर गिव यू यू मस्ट गिव यू टाइम टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। ओके, तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई कीजिए, बट आफ्टर दैट आई थिंक ज़्यादा एक्सप्लोरेशन एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। यू हैव टू लाइक ब्रिंग यू योरसेल्फ बैक एट सम फोकस पॉइंट, राइट। सो आपको डिसाइड कर लेना है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अंदर कि आपको क्या करना है। लगभग मतलब उतना हार्ड कोड अगर नहीं कर रहे हो तो at least you should get an idea about what are your interest. Are you interested in coding, or are you interested in some non-code domains like graphic designing or business management things? ठीक है, तो after that you try to prepare yourself for the rest of the 2 years. Like final year में आपका placement start हो जाता है, तो second and third year you try to prepare yourself based on your targets and goals. Like आपने क्या डिसाइड किया, आपको अगर बिजनेस में जाना है तो आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में शायद जाना है, कोडिंग में जाना है, तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिए सेकेंड एंड थर्ड ईयर। एंड फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर, मैक्सिमम सेकेंड सेमेस्टर में आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको क्या करना है।
So yeah, that's all. ओके, थैंक यू शुभम भैया। एंड चंदन सर, आपके क्या जर्नी रही फर्स्ट पहले 3 या 2 सालों में, कि आपने कब ये किया कि आप प्लेस ही होना चाहते हैं, या फिर आपका फोकस कब क्लियर हुआ किसी पाथ के लिए? ओके, सो देखो, जर्नी आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी कवर कर दिया, बट हाँ ये बात है कि क्लियर कब हुआ मैं कि प्लेसमेंट्स में ही जाना है। बिकॉज हाँ, अगर स्टार्टिंग में आप ऐसा सोच के आते हो कि आपने टेक्निकल फील्ड में जाना है, देन देर आर मेनी फील्ड्स, इवन देर आर सर्च रिलेटेड फील्ड्स जहाँ पे आप जा सकते हो। सो दैट वॉज ऑलमोस्ट माई माइंड, जो जब मैंने मन बनाया वो दैट वॉज इन सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर मैंने सब एक्सप्लोर किया कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई इवन कंसिडर्ड गेट, कि हाँ गेट भी होता है एग्ज़ाम, तो आप वहाँ पे रिसर्च करना है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। सो आई थॉट कि आप इतना एजुकेशन ले रहे हो तो आई नीडेड सम ब्रेक फ्रॉम लाइक एजुकेशन। सो आई थॉट दैट प्लेसमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। सो दैट वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज क्लियर्ड अप। सो हाँ, तो फर्स्ट ईयर जो था मेरा वो मोस्टली था एक्सप्लोरेशन का। तो हर एक फील्ड्स, जितनी भी फील्ड्स हैं, एक्सप्लोर एक्सप्लोर की मैंने। सो यस, उसके बाद तो आपको बताइए, थर्ड ईयर में आपकी प्लेसमेंट, मॉक प्लेसमेंट्स आपकी स्टार्ट हो जाती हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह। सो आप उनमें बिजी हो जाते हो। सही है। तो आप दोनों को ये लगता है कि हमारा कॉलेज इनफ था प्लेस करने के लिए आपको, चंदन भैया, और गेट क्लियर करने के लिए आपको शुभम भैया? Yeah, कॉलेज में call. देखो, Okay, okay, Chandan speak. सो कॉलेज में ऐसा होता है कि आपके पास टाइमिंग्स काफ़ी आपको मिल जाते हैं, ठीक है, इतना असाइनमेंट का इतना कुछ लोड नहीं होता। तो यहाँ पे हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ चीज़ पढ़ाई जाएगी, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। आई वुड से दैट 80% चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। सो हाँ, ये रहता है कि इतना इनफ फैसिलिटी चाहे आपको ना मिले, बट अगर आप खुद से मैनेज कर सकते हो, सो आई थिंक यू कैन क्रैक एनी कंपनी बाय दैट। एंड इट टेक्स ऑल एफर्ट्स फ्रॉम योर सेल्फ ओनली। आपको खुद को ही अपनी स्पिरिट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा इन सारी एज में। या शुभम भैया? हाँ, तो कॉलेज कितना हेल्प किया मैं बताना चाहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट कॉलेज फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपको अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, इससे अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दिस कॉलेज एकेडमिक प्रेशर इज़ नॉट दैट मच हाई। ठीक है, तो आप एकेडमिक्स कॉलेज का आराम से मैनेज कर सकते हो, और साथ साथ आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर सकते हो। सो लाइक मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं जब गेट के लिए डिसाइड किया था, तो एक तो गेट करने का एक फ़ायदा ये है कि सिलेबस लगभग बहुत मैच करते हैं कॉलेज लाइक करिकुलम के साथ। तो अगर आप गेट का पढ़ रहे हो ना, आप इनडायरेक्टली कॉलेज का भी पढ़ रहे हो साथ में। सो मैं जब लाइक गेट के लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ता था, मैं नोट्स बना लेता था, और सेमेस्टर एग्ज़ाम में मुझे वही नोट्स काम आ जाते थे। और लाइक सारे बच्चे जब एक दिन 2 दिन पहले सब पढ़ना स्टार्ट करते थे, मैं मेरा मैक्सिमम सब कुछ हो चुका होता था। ठीक है, तो फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिस कॉलेज इज़ इनफ। लाइक इनफ मीन्स, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ही खुद को ही करना होता है प्रिपरेशन। आपके कॉलेज उतना आपको लाइक हेल्प कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 90% थिंग्स आपको खुद ही करना है। बट यह चीज़ है कि इस कॉलेज में आपको बहुत टाइम मिलेगा वो करने के लिए। और बात है प्लेसमेंट्स की, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्लेस हो जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हमारे सीनियर्स, बहुत सीनियर्स हैं अपने बैच में भी, हमारे साथ वाले भी है जो अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड है इसी कॉलेज से। लाइक इनिशियली शायद ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, बट विद इन 1 year दे स्विच टू ग्रेट कंपनीज लाइक अमेजोन एक्सेट्रा। ओके, सो प्लेसमेंट डुएबल है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बेस्ट कॉलेज है, मैं ये मानूंगा। तो हाँ, इतना ही। ओके, दैट्स ग्रेट। अभी चंदन सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा पहले। तो पहला क्वेश्चन ये कि आप इंटर्नशिप्स या फिर जॉब्स के अलावा कोई वेज थे जब आप कॉलेज में अर्न करते थे, या फिर ओके इंक्लूडेड इंटर्नशिप्स,
कोई वेज जब आप कॉलेज में अर्न करते थे? सो कॉलेज में मोस्टली तो मेरा एक ही वे था, इंटर्नशिप बाय इंटर्नशिप आई वाज अर्निंग। मैंने कॉलेज में दो दो बार इंटर्नशिप किया, ठीक है। एक बार तो सेकंड ईयर में, तो जो प्लेटफॉर्म टेक ग्रुप है उसकी पेरेंट कंपनी है जो प्लेटफॉर्म टेक सॉल्यूशंस, उनके सीईओ दिलीप सर, आई वाज हायर्ड बाय देम सो एज एन इंटर्न। सो मैंने इंटर्नशिप करते करते ही पहली बार मैंने अर्न करना स्टार्ट किया। फिर इन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ऑल्सो आई वेंट टू एन इंटर्नशिप इन दिल्ली। सो and that time also I earned by doing an internship only. There are other opportunities also, like जो मेरे friends हैं जैसे मेरे सेक्शन में, so they were earning by social media, अपने मतलब पेजेस बना ली सोशल मीडिया पे और फॉलोअर्स बढ़ा के they went to an Amazon affiliate program and they collaborated with some vendors और उनके प्रोडक्ट्स मार्केट करके they used to earn. And yes, so that was pretty much. ओके, ऑनलाइन बिजनेसेस। तो आपका क्या इसमें आइडिया है और आपके क्या व्यूज़ हैं ऑनलाइन बिजनेसेस इस पे, कॉलेज में करना या फिर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना कॉलेज में, उस पे क्या व्यूज़ हैं आपके? ऑनलाइन बिजनेस यार देखो, वैसे अकॉर्डिंग टू मी, तुम अगर किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस करते हो ना, चाहे उससे तुम कुछ भी नहीं भी कमा रहे हो या तुम 1 रुपया भी कमाते हो किसी भी बिजनेस से, देन इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू लिसन फ्रॉम ऑल माय सीनियर्स, एंड इसके ही थ्रू मैंने अपने भी खुद के सोशल मीडिया पेजेस ओपन किए, एंड yes, that gave me a lot of experience ki now even I am placed in a software development company, but I could even go for digital marketing company. I am ready for all that things, so yes. ओके। और इफ फॉर द आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स, तो फ्रेशर्स के लिए पहले 2 साल का रोड मैप क्या होना चाहिए? अगर फ्रेशर्स प्लेसमेंट के लिए ही फोकस्ड हैं तो उनके पहले 2 साल का कैसा रोड मैप चलना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, प्लेसमेंट से पहले अगर तो तुम ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर किसी ने बाय हुक और बाय क्रुक किसी ने प्लेसमेंट लेनी है, ठीक है, तो उसका ये है कि वो स्टार्टिंग से डीएसए करे, ठीक है, और अपना कॉलेज का कोई करिकुलम फॉलो कर ले, जैसे कि मर्न स्टैक का या फिर एनी सॉफ्ट वेब डेवलपमेंट रिलेटेड या फिर कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड कुछ भी है, मतलब आप किसी एक फील्ड में जाओ और वहाँ पे आप उसके रिलेटेड आप कर लो इंटर्नशिप्स वगैरह, आगे जाके आप प्लेसमेंट में बैठ जाओ। हाँ, लेकिन अगर आप मतलब ऑफ कैंपस भी कर रहे हो तो फिर ये है कि आपको स्टार्टिंग से एक तो पता होना चाहिए आपने जाना कहाँ पे है, और डीएस से आपका एकदम कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एंड पे आके स्टार्ट किया, वो आपको पहले से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। दिस इज थिंग आई एम रियलाइजिंग नाउ कि if I would have done DSA from the very beginning, it would have been even more beneficial for me. So this is an advice for me from me to all the students कि DS से ये आपका consistent रहना चाहिए। I even was in constant touch with my friends at various NITs, so they also said the same thing कि DSA is the most important thing, जो आपका consistent रहना चाहिए। हाँ, if you go in internships or you can say that if you um, do a course like machine learning, so वो आपको बाकी बच्चों से एज दे देता है प्लेसमेंट्स में, so that is also a thing that you can do. Yes. एंड से कमेंट से एक दो क्वेश्चन है, मैं वो पूछना चाहता हूँ कि हाउ यू ब्रिंग रिक्रूटर अटेंशन, कि रिक्रूटर जो भी या फिर मास्क या फिर जाइंट रिक्रूटर जो भी हैं उनकी अटेंशन कैसे ब्रिंग करी जाए कॉलेज में या फिर ऑनलाइन? अच्छा, रिक्रूटर अटेंशन इन द वे कि वो आपको आके मतलब कोलैबोरेट करे आपके साथ। आई एम गेटिंग दिस एज अ क्वेश्चन, सो आई वुड रिप्लाई टू दैट। देखो, रिक्रूटर्स का ऐसा है कि वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो हमें अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे लोगों ने सपोज करो कि इंटर्नशिप लगाई है या जहाँ पे प्लेसमेंट कर रहे हैं वो, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो,
so we can get in touch with the HRs, and we can like platform also has an internship cell right now. So वो भी ऐसे ही फॉर्म हुआ था कि वेरियस कंपनीज के HRs को कांटेक्ट किया गया था, एंड दे वर ब्रॉट टुगेदर, एंड दैट वाज हाउ we got the attention of them, that we are available to hire. एंड एक और छोटा क्वेश्चन है, छोटा सा, कि सर हाउ टू स्विच फ्रॉम सर्विस बेस्ड कंपनी टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इफ यू गो इन अ मास रिक्रूटर. इसका देखो, एक सिंपल आंसर है, डीएस से, दैट आपकी कोडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और सेकेंडली आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ठीक है, वो आपकी एक जैसे जावा हो गई है, सी प्लस प्लस हो गया है, आपको इन लैंग्वेजेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि देर आर वेरियस कॉन्सेप्ट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक कॉन्करेंसी, पैरेलल प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको एक हाई लेवल प्रोग्राम मतलब वो भी ऑफर करती हैं, बट नॉट एज मच एज यू कैन यूज देम इन मीडियम लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा और सी सी प्लस प्लस. बेसिकली ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. प्रिपरेशन इज द की, आई वुड से दैट you have to prepare for DSA, that should be consistent. And yes, even I was in a service based company when I was doing my internship, that was service based, and I didn't like it very much, but yes, that was also a great experience, and I learned great things from that internship, कि आप मैनेज कैसे करते हो अपने टाइमिंग को, और एंड हाउ डू यू मैनेज योर क्लाइंट्स. Yeah, I think he's unavailable. So this is question to Das Bhaiya. Is gate and placement both can be managed simultaneously? यस इट कैन बी मैनेज्ड. तो आप मैनेज कर सकते हो इजीली, क्योंकि अगर आप लाइक गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जो कोर सब्जेक्ट्स है वो बहुत ही क्लियर हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, लाइक आपका डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया. ठीक है, सो दीज आर कोर सब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर साइंस. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है, और आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स जो है वो थियोरिटिकली तो क्लियर रहता है. बस आपको प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहना है. ठीक है, कि जो भी एल्गोरिदम्स आप पढ़ रहे हो इन थियोरी, यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज एल्गोरिदम विद एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, तो और प्लेसमेंट से पहले आई थिंक फॉर प्लेसमेंट्स यू नीड सीरियस 6 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन. अगर आप सीएससी से हो और सीएससी आईटी सेम ही बात है, तो 6 मंथ्स आप अगर प्लेसमेंट से पहले कर लो, और आप अगर सेकेंड ईयर से गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका कोर सब्जेक्ट्स तो वैसे ही क्लियर है. आपको बस कोडिंग करनी है प्रैक्टिस, और आपका डीएसए भी थियोरिटिकल बैकग्राउंड पूरा होगा. तो आप 6 मंथ्स फ्रॉम एनी पोर्टल लाइक गिग्स फॉर गिग्स हो गया, हैकर रैंक हो गया, आप कोडिंग प्रैक्टिस कीजिए, आपका प्लेसमेंट तो हो जाएगी. हाँ, सो गेट एंड प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली हैंडल किया जा सकता है. बट पर्सनली मैंने प्लेसमेंट्स में फोकस नहीं किया था, क्योंकि मेरा टारगेट ही गेट था, मेन टारगेट, और मुझे लगता था मैं मेरा जो नेचर है, मैं अगर कोई बैकअप रखता हूँ तो मेरा जो प्राइमरी गोल है उससे मैं डेविएट हो जाता हूँ. तो मैंने कोई बैकअप रखा ही नहीं था मेरे लिए. सो आई डिडंट इवन सिट फॉर प्लेसमेंट्स इन मेजर कंपनीज. एक दो कंपनीज में बैठा था मैं टेस्ट देने, वो भी जस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए. So there in company tests, I found many questions which were already known to me. Like they were previous year gate questions only from core subject questions. They were very easy for me. तो हाँ, गेट और प्लेसमेंट्स आप इजीली मैनेज कर सकते हो. Okay. So there are many questions on comments. Uh, There was one question, Chandan Bhaiya, from the comments that please explain a little bit detail and what is the roadmap for offline or on-campus placements and online placements. What is the difference in the roadmap? What should you follow? I didn't get the question. What is the difference between on-campus and off-campus placements? Their roadmap. That is the question. Yes, off-campus and on-campus placements.
What is Okay. the roadmap for So, both of them? For okay. So, जो तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स हैं आपकी, I would say that you can get the on campus placements if you intern in your second year. This is the first thing. And secondly, you have to be a little consistent, I would say, क्योंकि on campus placements इतनी मुश्किल नहीं होती हैं, you can crack them. And yes, so DS say you can start in your third year, and yes, the exploration that you have to do in first year, that is common in both the on campus and off campus placements. But in off campus placements, it is a thing that you have to be consistent in your data structures and algorithms. Even you can try to maybe make your own algorithms. You have to be very consistent and creative in forming the algorithms or yeah, data structures. So that is the difference. Main difference is that coding part you have to be very consistent in during if you want a good company in off campus placements. But in on campus, that consistency is not very much required, we can say that. Yeah, and one more thing, there are computer science fundamentals too, like oops, dbms. तो वो भी आप साथ साथ में करोगे तो that would give you much more benefits and clarity. Yeah. sir, there was also one question about non-tech branches. If a student is from non-tech branch, which is not from CSE or IT, can he or she manage to get placed in a CSE or IT company? And what should be a roadmap for him? Non-tech branches like narcoledge. ECE and mechanics both. Okay, okay. सो हाँ, देखो, जो भी कंपनीज यहाँ पे आती हैं, तो ऑन कैंपस कंपनीज वो मोस्टली ईसी मैकेनिकल को एलिजिबल करती ही हैं. हाँ, देर आर सम कंपनीज दैट दे डू नॉट they do not give them permission to enter their placement drive, but mostly it doesn't happen. So I would say that okay, first of all you should try giving PU meet, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में अराउंड फर्स्ट ईयर के एंड में आता है आपका PU मीट. दैट इज एग्जामिनेशन बाय विच यू कैन अपग्रेड योर ब्रांच और यू कैन मूव टू UIT चंडीगढ़ ऑल्सो. एंड there are various things about that, you can read them online on the portal, PU portal. एंड सेकेंडली, अगर आप फिर भी नहीं ग्रैप कर पाते, इफ यू आर इन ECE मैकेनिकल, यू कैन स्टिल गो इन IT companies because there are off campus companies first of all, and in more than 50% of the on campus companies you are eligible if you are a ECE mechanical student. Even ECE and mechanical core companies also visiting sometimes, so that is also a thing. Yes, and how they can prepare for those companies. They this was asked the question, like either Okay, by so DSC only or by interns. yeah, main thing is that they should be consistent on DSA. अगर आप DSA में consistency हर रोज 1 घंटा भी लगा रहे हो DSA को, there are many coding platforms, like there is Lead Code. I would say you should definitely visit that portal. That is only made specifically for the interview preparation point of view. तो आप लीड कोड पे जाओ, आप डेली का अपना गोल सेट करो कि यू हैव टू सॉल्व 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस. बिगिनर्स के लिए मे बी लीड कोड मुश्किल हो सकता है, तो आप स्टार्ट हैकर रैंक से भी कर सकते हो, या हैकर अर्थ से. यू कैन डू सम कोर्सेज ऑनलाइन जहाँ से आपको पहले बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की आपको नॉलेज हो जाए, थियोरेटिकल पार्ट बेसिकली. उसके बाद देन यू कैन मूव टू दीज प्लेटफॉर्म्स लाइक लीड कोड, जहाँ पे आप कंसिस्टेंट रहोगे. तो आप अगर EC मैकेनिकल से हो, आप यू कैन स्टिल मैनेज दैट, क्योंकि उनका एकेडमिक्स, आई नो दैट उनका एकेडमिक्स काफ़ी रहता है कि आपको बिजी रखते हैं वो काफ़ी. बट इफ़ यू इवन गिव 1 or 2 hours डेली, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ, आई वुड से. Chandan Bhaiya, you were placed in off campus, and this is one question: that what are the companies that you can name that came in this year in our college in on campus placements? On campus, Infosys,
um, Hashdin, Utrade, Catalyst One and Finxera, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है। कंपनीज का ऐसा रहता है कि चेंज होती रहती है कंपनीज। हो सकता है कि जो इस साल आ रही है वो नेक्स्ट टाइम ना आए, या नेक्स्ट टाइम और भी कंपनीज आए। So Placement, you don't want Samsung. to know the names, but the most thing that matters is कि that all the companies they almost follow the same criteria। वो आपका प्रोग्रामिंग चेक करती हैं, स्किल्स, कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स चेक करती हैं, एंड सम कंपनीज also ask for the aptitude। So this is the criteria। Okay. Coming to you, Shubham sir. I was watching you कि आप कब से सोच रहे हो किसी क्वेश्चन के लिए। तो अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने गेट क्यों चूज किया था प्लेसमेंट्स के ऊपर जब आप कॉलेज में आ गए थे? सो व्हाई डिडंट यू ऑप्ट फॉर प्लेसमेंट्स एंड फॉर गेट्स ओनली? Okay, so one sentence answer for this question is I want to get into IITs. That's it. So मेरा पर्सनल रीज़न यही था, मुझे आईआईटी से पढ़ना था, कुछ भी हो जाए लाइफ में। बट या साइड बाय साइड मुझे कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, मैं और डीप डाइव करना चाहता था, लाइक इन स्पेशली इन एआई एंड एमएल स्टफ्स. So and for machine learning things, like companies prefer a master's degree. So they generally do not hire BTech freshers directly for machine learning, deep learning roles. So for that also I joined master's program. And if you are doing planning to do masters, then please target only the top institutions, because कोई भी कॉलेज से it's not like bachelors, तो कोई भी कॉलेज से मास्टर्स मत कर लेना. So only top institutions आप टारगेट करो. So मेरा भी यही था कि इतना ही था कि कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था मेरा, और आई वांटेड टू डीप डाइव इनटू दिस सब्जेक्ट, सो आई चोज मास्टर्स. एंड सर कौन से कंटेंट ऐसे फॉलो करने चाहिए फॉर द फॉर द स्टडी इन कॉलेज, या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कॉलेज में कौन कौन से कंटेंट, यूट्यूब के कुछ कंटेंट्स या फिर ऑनलाइन नोट्स, कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए? या तो मैं बताऊंगा कि फॉर कोर सब्जेक्ट्स यू definitely try to watch the NPTEL lectures. NPTEL is like a portal where the professors from different IITs record their videos in every core subject. Like सब कुछ जितना भी कोर सब्जेक्ट है कोई भी ब्रांच का, उधर आपको अवेलेबल मिल जाएगा. जो यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा वो आपको एनपीटीएल में मिलेगा. तो इसमें कुछ डाउट्स आ सकता है, मतलब कोई 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 बोल सकता है एनपीटीएल वीडियोस आर वेरी मच बोरिंग. ओके, तो उनका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं होता. बट आई गारंटी यू एनपीटीएल में आपको जो कंटेंट मिलेगा ना, कोई भी सब्जेक्ट का, वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एमआईटी ओपन कोर्स वर्क. सो दो चीज़ है. एक है आपका एनपीटीएल, विच एनपीटीईएल, विच आर like all the IIT professors, different IITs create courses and they post on and this is free of cost. एंड सेकेंड इज आपको और थोड़ा हाई लेवल पढ़ना है तो एम आई टी ओपन कोर्सवेयर सेम चीज़ है, बस उधर एम आई टी के प्रोफेसर होते हैं और वो लेक्चर रिकॉर्डिंग्स होते हैं, उनके जो क्लास में लेक्चर लगती है उनकी रिकॉर्डिंग्स होती है. तो आप देख सकते हो. अगर आपको कोर सब्जेक्ट्स में बहुत डीप नॉलेज चाहिए, फॉर गेट ऑल्सो यू मस्ट फॉलो एन पी टी एल, यू मस्ट मेक नोट्स फ्रॉम दैट. आप एन पी टी एल आपको अगर बहुत स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के देखिए, मैं खुद 2x पे देखता था. बट देखिए मतलब बहुत ही सही कंटेंट होता है उसमें, और अब आपको मतलब कुछ मिस नहीं होगा वहाँ से पढ़ोगे तो. एंड आपको बोरिंग लग सकता है बट ट्राई टू गेट एक्वांटेड विद दिस थिंग, बिकॉज यू आर कॉलेज स्टूडेंट्स नाउ, आप स्कूल स्टूडेंट्स नहीं हो, तो आपका फोकस हमेशा कंटेंट पे रहना चाहिए, ना कि प्रेजेंटेशन में रहना चाहिए. ठीक है, तो एन पी टी एल डेफिनेटली ट्राई करो. और फॉर सर्वाइविंग, फॉर कंसिस्टेंसी, आप एक हैबिट आपको क्रिएट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल आप मतलब एक दिन में 8 घंटे पढ़ने की कोशिश मत करना कभी. आप दिन में 30 मिनट्स 1 आवर ही पढ़ लीजिए, बट ट्राई टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी ओवर द डेज. लाइक आप रोज़ पढ़ने की कोशिश करिए, कुछ टाइम पढ़ाई के लिए अलग रखिए, लाइक मे बी 15 और 30 मिनट्स, बट कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग. लाइक कंसिस्टेंसी लाने में बहुत मुश्किल होती है. कोई भी एक दिन में 8 घंटे पढ़ लेगा, बट
रोज़ 1 घंटा पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है। सो मैं तो यही बोलूँगा कि आप रोज़ पढ़ने की कोशिश करिए। आप टाइम पे मत ध्यान दीजिए, बस आपका ये होना चाहिए कि आप अगर एक दिन नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक आपको सिग्नल दे कि आज कुछ मिसिंग हो रहा है। ठीक है? तो ऐसे हैबिट बनाने की कोशिश कीजिए। टाइम लगेगा बट हो जाएगा, धीरे-धीरे करके हो जाएगा। मतलब 30 मिनट्स करके ट्राई कीजिए फर्स्टली, उसके बाद टाइम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो और अगर आप ऐसे करते रहो, अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉलेज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, कॉलेज एग्ज़ाम्स आपका क्लियर हो जाएगा। और वन मोर एडवाइस, डोंट इग्नोर सीजीपीए फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर, ओनली ट्राई टू मेंटेन ए डिसेंट सीजीपीए। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में हल्के में ले लिया था ये चीज़ों को। आपको सुनने में आया होगा सीजीपीए डजंट मैटर, ओनली स्किल्स मैटर्स, बट ये ट्रू है, बट सीजीपीए मैटर्स मैं कहूँगा। और इन दिस कॉलेज यू कैन इजीली गेट मेंटेन अ डिसेंट सीजीपीए। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप जस्ट सीरियसली प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम्स देंगे तब आराम से अच्छे सीजीपीए ले आएंगे। तो मैंने माय फर्स्ट सेमेस्टर सीजीपीए वाज 5.2 ओनली, तो इसलिए मुझे बहुत मुश्किल फेस करना पड़ा, इसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आप अगर शुरू से अपने सीजीपीए मेंटेन रखोगे, इट नॉट नॉट अ टफ टास्क, इजी टास्क। ठीक है? तो आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा, सीजीपीए का बहुत फ़ायदा रहता है। सो डोंट इग्नोर सीजीपीए इन कॉलेज। एंड हाँ, ऐसे ही था बस। एंड सर, आपके व्यू पॉइंट से कोचिंग की ज़रूरत नहीं है कॉलेज स्टूडेंट को गेट क्लियर करने के लिए? क्या आपने कोचिंग ली थी? कोचिंग मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, बट मैं सजेस्ट करूँगा कोई भी ऑनलाइन कोचिंग आप जॉइन कर लीजिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो। यू कैन जॉइन, मैं एक दो बोलूँगा, अप्लाइड एआई, अप्लाइड गेट कोर्स, देयर इज़ अ ऑनलाइन कोचिंग, नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव बट इट इज़ द बेस्ट। आप मेड इजी भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं आप। ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन तो अभी होता नहीं है, कुछ सब ऑनलाइन ही होता है। सो you if you join a coaching, the benefit is you get a proper road map। आपको frequently टेस्ट होता रहता है उधर, आपको एक कंपटीशन मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है। तो मैं कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, बट मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कोचिंग ज्वाइन करो, क्योंकि मुझे लास्ट में जाके बहुत कुछ चीज़ें ऐसे पता लगी थी कि मैं शायद कोचिंग ज्वाइन कर लेता तो ये चीज़ मुझे पहले पता चल जाती। एंड दिस थिंग्स हैपन, सो डोंट टेक रिस्क। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो कोचिंग ज्वाइन करना सही रहता है। ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, मैं खुद किया। ठीक है? एंड you can also follow some online portals for gate, for example one is gateoverflow.in। बहुत ही अच्छा पोर्टल है उधर, मतलब कम्युनिटी है, आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, आप डिफरेंट डाउट्स उधर पूछ सकते हो। तो मैंने वही यूज़ किया था। एंड हाँ, कोचिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो बिना कोचिंग के भी हो जाता है। बट आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा रिसर्च आपको करना पड़ेगा, हमेशा अपडेटेड रखना पड़ेगा खुद को कि कुछ नया तो नहीं आ रहा, कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहा है सिलेबस में, ये सब चीज़। थैंक यू सर इस वैल्यूबल कंटेंट के लिए। और ओके, एंड चंदन भी एक क्वेश्चन कमेंट से आपके लिए है कि ओके, फर्स्ट दिस क्वेश्चन, कैन वी थिंक अबाउट आईईएस एग्जाम? आईईएस एग्ज़ाम, आई थिंक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नहीं है इस एग्ज़ाम में, ओनली ईसीई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। तो आईईएस एग्ज़ाम इज़ लाइक, आप अगर आईईएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप गेट का प्रिपरेशन ज़रूर करो, क्योंकि आईईएस इज़ जस्ट एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ गेट। तो आईईएस में क्या होता है कि एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है। ठीक है? सो अगर आपका कोर ब्रांच है, मतलब अगर आप नॉन सी एस सी आई टी से हो, आई एस इज़ अ गुड ऑप्शन आपको। मतलब आप गेट के लिए तैयारी करो, गेट विल हेल्प यू टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम विच इज़ एमसीक्यू, and after that you will have a mains exam in IAS which is completely theoretical, subjective paper। आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, आपको उधर ही सब्जेक्टिव पेपर लिखना पड़ेगा। तो हाँ, आईएएस सोच सकते हो, गेट एंड आईएएस आर इन द सेम ट्रैक फॉर नॉन सीएसई स्टूडेंट्स। तो हाँ, कोचिंग ज्वाइन कर लेना ज़रूर, और सीरियसली स्टडी करो तो कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। थैंक यू सर। अभी
आपका एक और कमेंट आपके लिए है कि what was your daily schedule, how you overcame demotivation and got focused. या डेली शेड्यूल मैं बोलूँगा कि आई वॉज एन अर्ली राइजर, सो मैं सुबह उठ जाता था जल्दी। और सुबह मैं कोशिश करता था कि सुबह 2 घंटे मैं अपने गेट की पढ़ाई में लगाऊँ। सो आई वॉज यूज टू आई थिंक 6 to 8, 6 से 8 सुबह या फिर 6:30 से 8:30, 2 घंटे मैं गेट में देता ही देता था हर रोज़। और बाकी टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड फॉर मी, लाइक मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं 8-8 घंटा पढ़ता था, मैं कभी 8 घंटे नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मेन थिंग इज़ योर कंसिस्टेंसी, आप कितना कंसिस्टेंट रहते हो। गेट इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, आपको रोज़ पढ़ना है। क्योंकि आप अगर बीच में गैप डाल दे रहे हो, लाइक आपने 2 दिन 8-8 घंटे पढ़ लिया, बहुत सिलेबस ख़त्म कर लिया, उसके बाद अगर 1 हफ्ते का आप गैप दे दिया ना, आपको फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप रोज़ पढ़ो 2 घंटे 3 घंटे। टाइम वेस्ट पढ़ाई मत करो कि 4 घंटे ही पढ़ना है मुझे, ऐसे मत रखो। आपके सिलेबस को डिवाइड करो छोटे मॉड्यूल्स में और उसके हिसाब से अपना गोल सेट करो। जैसे मैं क्या करता था कि लाइक 1 मंथ, फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना है, तो मैंने सोच लिया कि मुझे जनवरी में कंप्यूटर नेटवर्क्स ख़त्म करना है। उसके बाद मैं देखूंगा कि उस सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कितने सब टॉपिक्स हैं, उसको मैं डिवाइड करूंगा और मैं डेली गोल सेट करूंगा। जैसे कि मुझे कल इस टॉपिक पर मुझे कल टीसीपी आईपी पढ़ना है, एक टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, मुझे ये टॉपिक कल पढ़ना है। उसमें अगर मेरा मुझे 2 घंटे लगे तो 2 घंटे लगे, अगर 8 घंटे लग रहे तो 8 घंटे लगे। ठीक है, ये आप टाइम बेस्ड गोल कभी सेट मत कीजिए। आप हमेशा, मैं सजेस्ट करूँगा, सिलेबस को मॉड्यूल्स में तोड़िए और उसको एज अ डेली गोल सेट कीजिए, इससे अच्छा होगा। क्योंकि और ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल सेट मत कीजिए, हमेशा शॉर्ट टर्म गोल सेट कीजिए। जैसे कि डेली गोल्स सेट कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल सेट करोगे, लाइक मुझे इस महीने के एंड में इस सब्जेक्ट ख़त्म करना है, ऐसे गोल अगर सेट करोगे तो क्या होगा ना, आपको हर टाइम ये आपको ऐसा लगेगा कि चलो अभी तो 29 डेज बाकी है, कर लूँगा, 20 डेज बाकी है, कर लूँगा। तो करते करते आप ऐसे मोमेंट में पहुंच जाओगे, आपके पास बस एक ही हफ्ते होगा, फिर आप डेडलाइन एक्सटेंड कर दोगे। सो बेटर इज दैट यू मेक क्रिएट डेली गोल्स कि आज मुझे ये ख़त्म करना है। तो ऐसे करते करते आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन होता रहेगा। और बात रही डिमोटिवेशन की, तो डिमोटिवेशन बहुत आएगी, मैं साफ बता देता हूँ। और स्पेसिफिकली डिमोटिवेशन सबसे ज़्यादा आती है जब आप फोर्थ ईयर में चले जाते हो और प्लेसमेंट्स लग चुके होते हैं, मतलब आपके फ्रेंड्स प्लेस्ड हो रहे होते हैं और तुम गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हो। तो आपको बहुत ये फीलिंग आती है कि मैं सीएसई से था, मेरा तो इजीली प्लेसमेंट लग सकता था, थोड़ा प्रिपरेशन कर लेता, तो मैं क्या कर रहा हूँ बैठ के इधर, और कोई गारंटी भी नहीं है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इससे ओवरकम करने के लिए मैं बोलूँगा कि आपका जो आपके अंदर का ना एक वो टारगेट होना चाहिए। जैसे मेरा था कि मुझे आईआईटी जाना है कुछ भी करके, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। और सेकंड थिंग मैं क्या किया था मेरे लिए, मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा बाकियों को, मैं कोई बैकअप नहीं रखा था अपने लिए। लाइक बहुत लोग बैकअप रखते हैं, लाइक एक प्लेसमेंट ले लेता हूँ टीसीएस का, इन्फोसिस का ले लेता हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती उसमें, एंड फिर मैं गेट का प्रिपरेशन करता रहता हूँ। अगर नहीं हुआ तो मेरे पास टीसीएस है, तो दिस इज़ द बैकअप। बट मैंने ये नहीं रखा था क्योंकि मेरा जो नेचर है ना, मैं अगर बैकअप रखता तो आई एम डैम श्योर दैट मैं गेट गेट छोड़ देता और मैं उस बैकअप में चला जाता। तो मैंने कोई बैकअप नहीं रखा था इसके लिए, तो मुझे ऑटोमेटिकली करना ही था। मैं आई कुडंट इवन टॉलरेट डिमोटिवेशन, लाइक डिमोटिवेशन अगर आ भी रहा है तो मैं अपने आप को यही समझाता था, तेरे पास कोई बैकअप है नहीं, मुझे यही करना है, तो और कोई ऑप्शन है नहीं। सो इन दैट वे आई डिड। बट मैं ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा कि बैकअप मत रखो, कि ज़्यादा डिप्रेशन आ सकता है या फिर बहुत लोग मेंटेन नहीं कर पाते उतना कूलनेस कामनेस। तो बैकअप रखो, बट आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डिमोटिवेशन आने मत दो, अगर आ भी रहे तो अपने फ्रेंड से बात करो जो कि आपको हमेशा सपोर्ट करता है। लाइक पेरेंट्स से बात करो, अगर क्लोज बहुत फ्रेंड से बात करो जो गेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको, या फिर आप नॉर्मल फ्रेंड्स में बात करो। 1-2 दिन का ब्रेक लो, तो ज़्यादा ब्रेक मत ले लेना। डिमोटिवेशन अगर आ रहा है, आई विल सजेस्ट 1-2 दिन आप आराम से एंजॉय करो,
उसके बाद फिर से पढ़ाई करने बैठोगे तो सब डिमोटिवेशन चला जाएगा, आपको फिर से एक नया शुरुआत मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो या दीज आर सम टिप्स आई कैन गिव अबाउट डिमोटिवेशन। Okay, that was great, sir. Consistency over motivation, of course. And Yashi, I'd like to you to come over and introduce Dilip, sir, to all of us. Yes, thank you so much, Uday sir. So I would now like to call Dilip Sharma sir, who has been the backbone of this club. He was the very first person who started this, and he's a 2020 pass out from this college and is currently placed in Yellow Dot AI. So let's hear him out about his experiences in platform and about his observations in the IT industry. So Dilip sir, kindly take over. Yeah, hello. Am I audible? Yes, sir, you are. Yeah, so hi, Dilip here. Uh, I am a SD developer, as you know, all, and my journey is mostly working to for the startup companies, and overall, like you can say that I seek freedoms in a company and innovation, and you can say that the responsibilities which is coming towards the company. And I will tell when I worked for the first startup company, which is Circle News, and it was acquired by ShareChat now. So that was the first acquisition in my career, and second acquisition is happening with the Tilpos company, which is acquired by the Bpos Australian company, which is a very bigger, you can say that the giant in the Australia. So these two acquisitions happened in my career so far, and you know that a startup have two exit plan basically. One is being acquired by some bigger giants, or they will bring a IPO. So you can say that in terms of the startup journey, these two startups were very successful, and they got acquired, and it was very, you can say that the happier moment that I was there as a core team in the both startup companies. Even you can say that what about the core team in Circle News, you can say at that time we are only two developers when we are building these things. So that was the overall things, and now like you all are here for the your placements and all. So it will be better like we will talk about the careers and all. So what I will tell is like this time overall, you can say like DSLO is something which is, I don't say it's important, but I will say it's necessary. It's a part of your curriculum. You don't say that, hey, I don't know that much DSNL go. Why you don't know DSNL go? This is the first question. It is not something like you have to prepare for DSNL go. You must have to prepare for DSNL go because it is a part of your curriculum. Being a fresher, everyone think that you should know about the DSA, you should know about the operating system, you should know about the computer networks, you should have a basic knowledge about C or C++ or any language. This is, you can say that the basic criteria. And how you got, you can say that the your degree, it is also a questionable things if you don't know these things. And also you don't have to prepare like I have given more than, you can say that, 50 plus interviews till now in my career, and what I have seen is you don't have to read anything outside your book. You have to read only that thing which is within your book. It is also a thing if you don't know these things. Yeah, hello. So basically, you can say that we have a lot of, you can say, the DSA courses, a lot of resources, and you will think that, oh my God, we have to read this much things. I have to read this, I have to read this, and then you will suddenly
say that okay, I don't think that it should be achievable, I have to leave. I am not the person who is going to get a placement. I am not the person who dream of you can say that the farm companies like Facebook, Apple, Google, or Amazon type of companies, and then you give up. Then sometimes what is happening that you say that, hey man, this technical world is not for me. Okay, and then you again give up, and then you start searching for some non-technical work. But you just forget one thing: it is your basic duties to complete these topics, because these are the curriculum of your things. It is within your curriculum. No one's saying that, hey, go and read something advanced. Nothing is advanced. No one asked any advanced question in you can say that the interviews, but they ask your basic, those curriculum type of questions and topics which is already in your curriculum, you can say. Even for me, I will say, even for me, you can say that after the college, even for a year, I wasn't something like, you can say, I know the algorithms, even the standard algorithms. Some of the algorithms like knapsack problem algorithm. This is very, you can say that the standard algorithm in your book it is available, na? The knapsack. But uh, I encountered this the same, you can say that the problem more than 5 to 10 times. But in initial interviews, I have no idea how to solve. I got stuck. Okay, how to solve? No, I have tried, but that doesn't work. And then when I started, you can say that preparing for the interviews, questions, and all, I realized that nothing is from outside. Everything is within my curriculum. Everything, even very hard, very advanced topics like system design. You know that I am a SD2, and always I encountered the system design questions, and all the system design questions is also available within your curriculum. If you there is a book named Principle of Programming Languages. Have you read that? Your teacher is saying that, hey, it's coming with the same concept, same things. It is repeating, it is overlapping. But the principle of programming language tell you that how you decide our language, what is the structure of our language, what is the beauty of that language. And if you read by heart, then you will understand the design patterns of you can say that the language. And when you can say that the understand that things, is there any advance, any different resources you think necessary for cracking a fang type of company? I'm not saying some mediocre company, I'm talking about the fang type of company. Do you think, is there any advanced material required? I don't think so. I have given interview, and I have seen that everything is coming up within your book. So I will tell you once again, just focus on your curriculum. If you think that, oh, I am not that coder type of the guy, I am not that who has spent a lot on the, you can say that the computer screen, but you should be that guy who at least complete their curriculum. And if you complete that curriculum, that will give you you can say that a benefit, a edge to land a job. And also I will tell you one of the, you can say that theories, where you know, when someone is saying that I am not good in reading, I am not good in this study things, or someone is saying that I am very slow in study things, do you know who think that I read less, I study less, who generally tends to do more study than who think that I study more? And the example is simple. Say, I will tell you the analogy. Like suppose one of the person who is very good in study, he will read, he will give the exam, and he will be passed.
how much time he read? A year. But suppose you are the person, you think that I am not good in a study, and then you read, you failed. Wow, 1 year gone. Next year, again you read, again you fail. Again next year, you read and you pass. Tell me, what is the cumulative time when you have read? I think it's more than the 1 year. And you are thinking that I am not good in reading. But you have you have read more than a average person. Why? Because you are thinking that I am not good in reading. And this thinking, this mindset, you can say, give you a longer journey for you. It's created a longer journey for you, and you finally, you can say that ended up reading a lot of time. So it's better, why not I will read earlier, or why not I will read when it's necessary to read. It will give you a lot of benefit. First thing is, you have to read, whether you will going to read today, whether you are going to read tomorrow, but you have to read. That is something which is fixed. Now you have to set up your mind, hey, I have to read these things, whether I will read today or whether I will read tomorrow, but I have to read. So that is something I can't negotiate. So now what are the things I will negotiate? First thing is the benefits. If I will read today, I will say my 1 year, I will do anything else. Second, I will get appraisals. People will say, ah, he is good in reading, and then he will say, yeah, I'm good in reading. It will boost up your confidence. And third thing is that you will be able to achieve your goals. So why not you will start reading today instead of saying that, hey, I am not good in reading? Because eventually you will going to read a longer if you are saying that you are not good in reading. And second step I will say, I think Shubham is also pointed that things. Whenever you are preparing for something, everyone knows that if we'll read, if we'll study better, then our life will be better. But why we don't study? This is a very bigger question. Everyone knows here. Everyone coming here, he knows that okay, I have to read this. Whatever I am telling you, you already know. But what are the problems that some are able to crack, some are not? And the problem is the simple one, your mindset. Your mindset is saying what? You will be motivated for a some time being, some longer time period, maybe for a week. You will go and you will read, you will go and read, and then after a week, you will not getting the result instantaneously. So what you will do? You will be like you will losing your confidence, you will losing your motivations, and then you will stop whatever you are doing. So overall you can say that it's better, like you think that it's, you have to create a process. Like myself, I will tell, when I started working with the startup, what we have to do is, you can say that a startup have already a lot of work to do. So you can say that we are equipped, we are busy in doing all the stuff. There are always some release things, and we have to do that things. And also that a startup have initially there are not a lot of, you can say that the seniors. Then you have to figure it out how you have to solve the problems. And overall I will tell you that throughout my journey I have worked with the mainly the product based companies. So that in a product base you don't have to only create a solution, but you have to create a better and efficient solution. That is the another case which is coming. Like creating a solution for us is only 20% task, but 80% task is another thing. And what are those?
whether it is efficient or not, what is the impact of throughout the system, what is the customer behavior and obsession regarding this feature, what how maintainable this code is. You, whenever you are writing a code, you write that code for someone else, you don't write that code for yourself. Why? Because it is a product based company, and it will going to be more than, you can say that, 50 years, and maybe more than that. And if someone is reading your code, it should be understandable by that person, whatever you have written. Otherwise it will be called as a legacy code. You know, legacy systems, you have read that things, that concept. So those all are things coming our way. Okay, so overall the things is you have to create a process. Mine was, I was doing coding, I was doing my job, and then after that I had 2 hours to 3 hours, and I was preparing myself for the interviews. Always people say that it's better, like it is IIT industry, and you have to be like, every time you have to upgrade yourself, you have to learn every time something. And how you will do? Again the 2 hour slots, again I am going, I am reading for 2 hours. Okay, this is the things, this is the things I am trying. Why? Because I am getting the money for that. I know if I will do today, tomorrow I will going to create a lot of money. I will be the financially independent. I will achieve my dreams, I will achieve my goals. So in Bhagavad Gita, they say that कि कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो. So for long running battle, this is very good things. Don't think what you are going to take now. Don't think whatever you are going to take. But think about what you are doing today. It is good to write a journal. In our Indian society, writing a journal is, you can say that, not a hobby. No students write the journals, but it's a very good habit to track. Whenever you write a journal, you feel motivated. So that is the one thing you can do to be longer motivated by yourself. And it's better to create a habit. Like there are a lot of books as well, I have read a lot of books, and then that, you can say that, wired my mindset as well, how I was thinking earlier and how I was thinking now. There is a 7 habits of the successful persons, and it is saying that motivation is a type of the spark. It will not going to stay longer, but a habit is something which is just always going to be longer than, like, even Yes. you don't realize, and you will do that things. The one thing is, you can say that, like when we create a habit of waking up at 5 o'clock, it will be very tedious for us. Like, hey, 5 o'clock in morning, I have to wake up. Oh no, man, I don't going to do that. I am a person who sleep at 2 p.m. Okay, but eventually when you try it, when you adopt that practice, then automatically at 5 p.m. you will wake up. Every time at 5 p.m. you will wake up, and then you will say, oh, I am now in 5 p.m. morning club person. So you can say that this is something you even don't realize, and you will do. Like, even you, if you are preparing for the farm company, you are waking up and you have set your goal that I have to complete 4 questions every day. You will doing that 4 questions, and then it will be your habit. Even you don't realize, and you will do this. Even you don't realize, you will do this. So it's better to create a habit. And you know that there are a lot of the theories, like if you will try to repeat something by 21 days, then you will create a habit. Always focus on a habit, how you will create a habit. So I think it's better for everyone to create a habit. I am here not talking about like, hey, read this, read this, read this. You all know everything is available on internet, everything. But what is not available is how to achieve those things. The will, the will is yours, no one going to create for you.
That is not transferable. That is not, you will, you can say that, buy from someone else. It is something you have to create, and you are the owner, you are the creator. So that is the main thing you have to create. Like for me, I will tell again a bit of the my journey. Like, I am being an entrepreneur. I have created a company. I have run that company. I have left one of the job at that time. When I got the placement, I had the offer letter, and then I have tear down that offer. No, I have to run my company. Eventually I have run that company, and eventually that company got stopped. You can say that the revenue stream was not that good, but it doesn't mean that I haven't learned anything. I was a failure, no. Always remember one thing: a successful person have only one way to tell you how to be successful. Why? Because there is only one way to become successful. But a failure man tell you a lot of the way how not to, like how not to be failure. And there are a lot of way when you will ended up being a failure, and it's a lesson. Okay, so took those lessons. Whenever you got a failure, whenever you got a success, it's always a lesson. When you think it's always a lesson, you never be disappointed. You never think that, hey, whatever goals I have set it, I haven't achieved. And no one knows that what will happen. Like, I will tell you one thing: if I have accepted that offer, I wasn't going for my company, then at that time of the period I will be a Infosys system engineer guy earning 3.6 LPA. Is it good? Or at this position where I am, is that is good? Think about this. How drastic changes happened in my life. Being a system engineer in Infosys to being SD to in a fast growing startup company, LOAI. LOAI have, you can say that it's creating the chatbots. And think a name of any Indian brand. Think a name of any Indian brand who is not using our chat application. Think Flipkart. Yeah, they are using our chatbot. Zomato. Yeah, of course, they are also using our chatbot. SBI. Oh, they are also using our chatbot. So you think that whatever name you will take, they are already using our chatbots. So this is the company where I am. And here you can say that you have handled one or two servers at a time. Here we have 3000 microservices, means 3000 servers we are handling here. And I am in R&D team, and R&D team have the thing that, you can say that, we have to identify which chatbot going to be like, getting a lot of the transactions. Yeah, Swiggy have also their customer support things with us. Okay, so like suppose one of the, you can say, some of the like companies are getting higher transactions at a time. Like a lot of persons have a lot of the issues, and then they are started uh, talking about with the chatbot. In that time of the period, the load will be very high. So being an engineer, it is our duty to identify those things. And like you have seen that hot star things. Hot star guy always be prepared when there is a Indian Pakistan match. They even released a video how Indian Pakistan match is for them. For you, it's a very good things you are enjoying, but for them, it's a type of war. Okay, like hey, 10 million plus people will be concurrently on our platform, and then we have to handle that type of the load so that Hotstar don't be crashed. Same thing happened with us. Oh, that much traffic is coming on this chatbot. How to handle this? Yeah, let's start. So there are a lot of the things. It's something you can say that currently it's a very interesting work I'm doing here. Instead of like, I always think, and then you can say that it's something I feel, wow, hey man, what happened with me? I will be in Infosys. What I will do? I will get a support job there.
And then what I will do, I will do some codings and I will be with them. Think how scary these things is, being a system engineer in Infosys. Okay. And also I have seen a lot of person who are cracking nowadays Amazon, Flipkart, Zomatos and all the companies. And then what I realized, like when I was in college, definitely I will tell you one of the things, how you will get the referral of these companies, how they will going to hire a three-tier college students like me. They are not going to hire me. They have a lot of person, they have a lot of the talent to filter out. They will not gonna reach for me. And that's why I, you can say that just for a year before I haven't applied any bigger companies, just due to this thinking that they are not going to look up for me. But I will tell you one thing, when I got this company, I worked here, I got a very better, you can say that, the profile on the Stack Overflow, LinkedIn and all. I got mail without apply to Amazon. They are say that, hey, we like your profile. Can you interested to apply in Amazon? Think it's a very drastic change. A guy like me. Why? Because I was thinking that if I will apply to Amazon, they will never going to reply me back. Why? Because I am a tier three guy who have nothing, nothing, no brand, nothing. But when you got a mail from a recruiter from Amazon, and he is saying that he is interested in your profile, think how it is. Whoa, means they are trying to search for the talent, and it's no matter where you are. What is matter a lot, how you are nurturing your talent. That is the one thing which is more important. Wherever you will be, they will find out. Okay, so it's better to don't think about where I am, what is my college, how I will get the referrals, how I will try. What you have to do is nurture your skill. There is I think some of the theory, the secret things, like uh, whatever you think with the positive mind, it's attracting all the components to make yours. I think uh, yeah, one of the movies there is a dialogue to Shahrukh Khan is saying, जर्रे जर्रे से मिलाने की कोशिश की है, something like this. This is the same concept. When you think about anything, you start behaving like that. If you think, yeah, I want to work in Google, your mindset, your actions, everything will be aligned with the Google. You think, okay, Google like this type of the complexity of the questions, you start preparing for those questions, you start solving for those questions. And that is the thing why we say that you have to always create your goal. This is the thing. Whenever you create goal, you can say that directly, indirectly, consciously or unconsciously, you will start moving towards your goal. Whether you will achieve your goal or not, that is another question. But it is very definite that you will be very nearer to your goal. You will learn from that So goal. there are some questions from the uh, chat also. Yeah, please. या सो इट वाज ऑनर्ड टू टॉक टू यू आल्सो, और स्टार्टअप्स के बारे में बात करना और कैसे आपकी जर्नी रही. सो एक्चुअली जब आप कॉलेज टाइम में थी, तो आपके स्टार्टअप ने कैसे हेल्प किया आपको कंपनीज के पास पहुंचाने में? लाइक फॉर योर पॉइंट ऑफ विजन, आपने नहीं सोचा था आप येलो आई में बैठे होंगे या फिर किसी स्टार्टअप बड़ी स्टार्टअप में काम कर रहे होंगे. बट स्टार्टिंग से अगर आपका गोल किसी बेटर प्ले कंपनी के लिए रहता, लाइक इन्फोसिस या फिर डिजिटेक सॉल्यूशंस, सो आपका कैसी जर्नी रही होती अगर आप वहां गए होते? तो आपको स्टार्टअप्स ने कैसे हेल्प किया, मतलब एक अलग पाथ ले जाके? Yeah.
सो लाइक इंफोसिस या ये बारिश बाकी सारे कंपनीज हैं जो मान लो एक टिपिकल एमएनसीज कंपनीज, उसमें क्या होता है कि दे हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड गोल and that goal is not going to fit for you. The reason is one, that is designed for everyone means, you know, Infosys recruiting the mechanical boys also, Infosys recruiting someone who is even not an engineer also. Okay, so that is something they have designed. तो अब क्या लो कि होता क्या है वहां पे, बीई में जो तुमने पढ़ा, दे विल गोइंग टू टीच यू द सेम थिंग. ओके, तो एक उनका हो गया ट्रेनिंग थिंग्स जो कि तुम्हें ट्रेनिंग करना है. दूसरी बात ये होती है कि जो उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी देने का तरीका होता है, पहले वो छोटे छोटे जॉब्स में सपोर्ट जॉब्स में रखेंगे, देन देयर विल बी सम मैनेजर्स जो तुम्हें स्पून फीडिंग कराएंगे. व्हेन यू आर स्टार्टिंग स्पून फीडिंग, यू नो दैट कि वो क्या होता है. फिर your mind will not going to work. You are getting some from somewhere else and then you are trying to build. तो ऐसे में जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही लिमिटेड ग्रोथ हो जाती है. यू डोंट हैव द ओनरशिप, यू डोंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी. पता है ना, मैंने बोला था कुछ देर पहले कि जब तुम किसी रोल में अपने आप को फील करते हो, लाइक यू आर वर्किंग इन अमेजन एज एस डी, तो वो तुम्हारे लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक एटीट्यूड क्रिएट करता है और उसके अकॉर्डिंगली तुम काम करते हो. इन्फोसिस में बीइंग ए इंजीनियर, यू नो दैट मेरे रहने या ना रहने से इन्फोसिस का कुछ नहीं होने वाला. इन्फोसिस इज नॉट इन योर सोल्जर्स ना, देर आर अ लॉट ऑफ पर्सन. बट एक स्टार्टअप में क्या होता है, स्टार्टअप में तुम 1 घंटे के लिए गायब हो, हाहाकार से मच जाती है. अरे कहाँ गया वो Yes. लड़का, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया. वाई? बिकॉज दैट स्टार्टअप इज डेफिनेटली ऑन योर सोल्जर. अब सोच लो, जब तुम्हारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे करोगे तुम काम. यू विल थिंक ना यू आर रिस्पॉन्सिबल, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग लाइक दैट एंड देन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट थिंग्स. एंड एंड ये वहीं पे माइंडसेट, असली काम करके पता लगता है, क्योंकि यू हैव टू रियली वर्क फॉर स्टार्टअप्स एंड लाइक काफ़ी कंपनी का कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में वर्क कर रहा है, और रेवेन्यू टाइप्स टीम्स भी अच्छे से कोऑपरेट करती हैं बीच में, एंड काफ़ी सारे काम एक साथ होते हैं. या तो एक फन क्वेश्चन है सर आपके एवरीथिंग. लिए. अगर आप कॉलेज में होते हैं और आपके पास लाइक आप एक रिच गाय होते हैं, आपके पास बैंक अकाउंट में 10 lakhs होते हैं, तो आप अभी सेम पर्सन होते हैं यहीं पे, या फिर आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, या फिर क्या आपके डिसीजंस रहे होते हैं? तो क्या ये माइंडसेट भी आपको ड्राइव करता है जहाँ पे आपको ओवरऑल वहाँ देना है? आई विल टेल दैट आई एम नॉट अ एम्प्लॉय टाइप ऑफ गाय. सीधी बात तो ये है. एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि मैं एमएनसीज भी लाइक नहीं करता. बिकॉज या आई विल टेल यू वन ऑफ द प्रॉब्लम विद द अमेजन, कि लाइक अगर एक स्टार्टअप में हो, यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यू विल टॉक टू अनदर person who is solving another problem in different parts. A startup gives you can say that प्लेटफॉर्म की तुम किसी से भी कनेक्ट कर लो, किसी से भी कुछ भी पूछ लो. एक एमएनसीज लाइक अमेजन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी द प्रिंसिपल इंजीनियर. बियॉन्ड दैट व्हाट एवर इज हैपनिंग यू डोंट नो. और अगर आप ट्राई करोगे फाइंड आउट करने की, तो आपको नहीं मिलेगा. अब ऐसे कंडीशंस में अगर मैं अमेजन जैसी कंपनी में अगर मैं 4 साल भी काम करूं, ऑफ कोर्स माय कोडिंग स्किल विल बी बेटर, बट व्हाट आई एम लर्निंग इन ए स्टार्टअप, दैट आई विल नॉट गेट. क्या? हाउ टू हैंडल दिस बिगर कंपनी. ठीक है, what is the leadership qualities, what are the leadership skills, how some of the problems or challenges these organizations are facing, and how other persons are helping that. और जब आपको एक फुल और कंप्लीट जब पिक्चर मिलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, यू नो व्हाट इज योर वर्थ, हाउ यू आर गोइंग टू डू, एंड यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम दो. और आप ऐसा भी नहीं होते ना कि एक मेढक के देखते हो ना, एक मेढक होता है जो एक तालाब में रहता है और उसको लगता है कि ये तालाब ही तो पूरा संसार है.
इसके बाहर कहाँ कुछ है। तो सेम थिंग हैपनिंग, बट जब तुम बाकी सारी चीजें एक्सप्लोर करते हो तो तुमको तो अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। लाइक हमारे चैटबॉट्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं, एंड ईच एंड एवरी पार्ट्स आई नो, ओके यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये लोग ये करते हैं, यहाँ पे ये लोग ये करते हैं, आई नो एवरीवन, ओके समवन इज डूइंग अ लॉट ऑफ द थिंग्स। एंड दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट कि कितना बड़ा है, कि कितने फेजेस में ये सारी चीजें बिल्ड होती हैं, और लोग कैसे कैसे बना रहे हैं, उनको क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है। जैसे कि हम लोगों में हर एक वीक एक डेव कोलैब सेशन होता है, जिसमें कि आप अपने एक्सपीरियंसेस बताते हो। जो अलग टीम में काम करे वो अपने एक्सपीरियंसेस बताता है कि वी फाइंड आउट दिस प्रॉब्लम एंड वी आर सॉल्विंग दिस, और हमारे साथ ये हो गया, हम ये हो गया। दैट इज वेरी, दे टॉक इट वेरी फनी वे। वो दे, मतलब वो सॉन्ग तक गाते हैं, लाइक क्या से क्या हो गया। तो दैट इज समथिंग True. लाइक, And when you work with founders, so या yeah, yeah. सर ऑल्सो यहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ही हैं जो मोस्टली वॉच यूट्यूब पे कर रहे हैं अभी स्ट्रीम पे। तो आप उनके लिए क्या एडवाइस दोगे, नॉट फॉर ओनली एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट बट फॉर द प्लेसमेंट्स, या फिर गेट के लिए भी क्या आपकी एक रोड मैप रहेगा? क्या आप उनको बताना चाहोगे बेसिक थिंग्स कि आप ये फॉलो करो फॉर द फर्स्ट ईयर्स? या सो आई विल टेल यू कि journey is very longer, and you have to stay focused. And how you will focus? The one thing, create habits, habit of success. If you will create a habit of success, you never realize that you are preparing for something bigger. And why I am telling that, because whatever you are going to read in first year, that will be eventually beneficial for you after 3 years, means in fourth year. Think, it's a very longer time period. Horizon is very long, and for that time of the period, to be stay motivated, it's better that you create a habit. Like, habit will be anything, you create routines. And always remember, whenever we are creating routines, we always think that we will going to follow it up to 100%. Never think about the 100%, never. If even you are completing for 20%, it's good, it's great. मतलब होता है कई बार रूटीन में ना, कि हमने लिखा कि 9 AM हम जगेंगे, हम 9 AM नहीं जगेंगे, तो हम क्या कहेंगे, कल से अब रूटीन फॉलो करते हैं, आज तो टूट गया। अरे, एक पॉइंट गया है, 9 AM के बाद भी तुम्हारे रूटीन्स में बहुत सारी चीजें हैं, ट्राई टू कैच अप ना। अब क्या, मतलब एक ट्रेन का ड्राइवर हो, वो सोचो अगर ऐसे करे कि उसने ट्रेन रन किया और एक स्टेशन पे पहुंचा, कहा अरे यार यहाँ तो आधे घंटे लेट हो गया। पैसेंजर को कहे, अरे आप लोग उतरो उतरो सारे लोग, मैं अगले दिन ट्रेन टाइम पे चलाने की कोशिश करूंगा। भाई आगे ट्रेन चलाने से क्या ही फायदा, ट्रेन तो लेट हो चुकी है ना। क्या ये एटीट्यूड बेटर है कि ये कोशिश करे कि चलो नेक्स्ट स्टेशन भी है, आई विल ट्राई टू कैच अप? व्हाट इज बेटर? थिंक। So always don't think that 100%. I am not the person of the perfectionist, you can say. मैं नहीं हूँ जो perfect things में believe करता है, but I am the person who believe in iterations. iterations. Even अगर तुम थोड़ा सा realize करोगे, जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो सारे के सारे एक आइटरेटिव वे में काम करते हैं। जितने भी प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करना है ना, सारे एक लूप में काम करते हैं। So why not in your life create some loops, create some iterations? It will help you in longer journey. सर एक लास्ट क्वेश्चन है, अ रोड मैप फॉर एमएल एंड एआई in the field of ML and AI career. What is the roadmap for them if you are in a second year or third year? Yeah, what I will tell is, listen, ML and AI is not very tired with SD. It's more tie, or you can say that, towards the mathematics. First thing you have Yeah. to think like this. Okay. Second thing is, in terms of the job and all, MLAI job for the freshers are not that much. Always remember that. And why? Because the subject itself is more mathematical, and they think
अगर तुम्हें एमएल ए आई आ रहा है, तुम किसी भी कंपनी में जाओगे तो यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, बट यू विल बी लाइक अ पर्सन ऑफ द R&D डिपार्टमेंट। क्योंकि अभी भी तुम देखोगे हमारे ए आई एम एल से बहुत कम प्रोडक्ट हैं जो बाहर निकल के आ रहे हैं, मैक्सिमम R&D में है। तो यू हैव टू थिंक एज ए R&D डेवलपर। और R&D में क्या होता है, वो अक्सर प्रेफर करते हैं कि जो मास्टर्स डिग्री करा हुआ हो उस बंदे को रखना। बट फॉर यू, इफ यू लर्न AI/ML, I will tell you that make it as secondary. Why is secondary? Because you are in BTech, and taking a normal ST role will be very easier for you instead of taking a specialized AI/ML goal. हाँ, बट ये जरूर है कि SD में रह मत जाना। दैट इज अनदर एडवाइस। एक बार जब तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में घुसो, स्विच मारो भाई AI/ML। या ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग प्रोमिसिंग। तुम कोड लिखते हो AI/ML के, देखते ही हो चैटबॉट्स हमारा, देखो सारा का सारा कस्टमर सेगमेंट जो है ना, कस्टमर केयर वाले, हाहाकार से मची पड़ी है BPOs वालों में कि अब हमें कौन जॉब देगा BPOs को। क्यों? क्योंकि आजकल अब पहले के जैसे कॉल करो और आप कस्टमर केयर को गालियां दो, कस्टमर केयर वाला गुस्सा करे, या चाहे कस्टमर केयर वाला बीच में कॉल काट दे और आपको क्या रे यार, कॉल ही काट देते हैं बीच में, फिर आपका कॉल नहीं लगता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आजकल दूर हो रहे हैं ड्यू टू द AI/ML। Delta 4. Yeah, that Delta 4 and efficiency delta. So that has हाँ, increased, of course. तो ओवरऑल देखो ये चीजें हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा और तुमको AI/ML सीखना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके दिस थिंग इज कमिंग इन, यू नो दैट देयर इज अदर पार्ट आल्सो, यू नो वेब 3। वेब 3 किसी Yeah, को पता है क्या होता है वेब 3? दैट इज वेरी प्रोमिसिंग। उसमें आता है तुम्हारा मेटावर्स, उसमें आता है तुम्हारा क्रिप्टोज, ये सारे वेब 3 के हैं। उसमें आता है तुम्हारा AR/VR। मतलब फेसबुक इज सेइंग दैट कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वर्ल्ड जहां पे आप मॉल का जो भी एक्सपीरियंसेस है ना, आप घर बैठ कर सकते हो। मतलब आप कपड़े जाओ, कपड़े आप अपने ट्रायल रूम में ट्रायल करो, मॉल जैसे घूमते आप घूमो, एंड दैट विथ लाइक लिविंग इन योर हाउस इटसेल्फ। थिंक, उन्होंने कुछ कुछ सूट्स बनाए हैं जिसके साथ आप अपने दोस्त के साथ खेल भी सकते हो, एंड इवन यू विल क्या कह सकते हो कि आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने सेंसेशंस को। लाइक कि अगर आप एक आम छूते हो तो आप फील करते हो या इट्स आम, ऐसे ना। तो ये सेंसेशंस उन्होंने क्रिएट स्टार्ट किया। सोचो वर्ल्ड कहाँ जाने वाला है इन सारे टेक्नोलॉजीज से। तो ये सारी चीजें हैं जो कि तुम इसको लर्न कर सकते हो। एंड या ऑफ कोर्स, एट द लास्ट वन थिंग आई विल टेल, वेन एवर यू गेट अ जॉब, इट्स बेटर टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स। वाई ओपन सोर्स? क्योंकि ओपन सोर्स से बहुत ज़्यादा तुम्हारा ब्रांड बनती है, ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इट्स बेटर ऑलवेज टू give back something to the community, and always remember, whatever you will give back to the community na, you will get lot more than that। सपोज करो मैंने अगर ये मतलब सपोज करो ऐसे ही आधे आधे घंटे अगर मैंने किसी ओपन सोर्स में काम किया ना, अगर 2 महीने मैंने काम किया ना, अगले महीने मेरे को एक मेल आएगी, हे दिलीप, वी लाइक योर कंट्रीब्यूशन ऑन दिस प्रोजेक्ट, वुड यू लाइक टू वर्क विथ अस, वी आर अ renowned startup in the Silicon Valleys and we are going to give you ₹1 crore। सोचो, वो बंदा आपको ढूंढता ढूंढता आया क्योंकि आपने स्किल दिखाया ना। तुम्हें भी पता है ना कि 3 घंटे के इंटरव्यू में कोई तुम्हारे बारे में नहीं जान सकता कि तुम कितने बड़े तोप हो। बट व्हाट यू आर डूइंग, एवरीवन इज सीइंग दैट। आजकल इंटरनेट का जमाना है, सब लोगों ने ट्रैकर तक लगा रखा है कि अच्छा ये बंदा ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अरे ये बंदे का कोड इतना अच्छा है, क्योंकि वो सब ट्रैक रहा है। AI/ML का जमाना है ना, आजकल अब गूगल सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, AI/ML खुद ढूंढ रहा है, खुद ढूंढ रहा है। अच्छा अच्छा, इस लड़के का अच्छा है, इसने यहाँ यहाँ रिपोजिटरीज में कंट्रीब्यूट किया, बस तुम्हें वो मेल आएगा और देखो तुम कितने खुश हुए। तुम अभी क्या फ्री में काम कर रहे थे यार, मतलब 2 घंटे डेली तुम किसी ओपन सोर्स में फ्री में ही काम कर रहे थे, पैसा तो मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी जो तुम्हें 1 करोड़ का ये ऑफर आया है, कहाँ से आया है?
क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस 1 करोड़ वाले बंदे के पास तुम खुद जाके बोलते कि भैया मुझे ले लो ले लो ले लो, और तुमको वो ले लेता? नहीं लेता। एक बंदा और था जो कहा जाता है कि गूगल में प्लेयर था। वो कैसे हुआ था, उसने गूगल के बहुत सारे बग्स निकाले थे, उसके सॉल्यूशंस निकाले थे, और वो अप्लाई जब करता था तो ये नहीं कहता था हे आई नीड अ जॉब। वो क्या करता था, हे आई हैव फाइंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस थिंग्स इन योर कंपनी, वुड यू लाइक टू हायर मी? अब उसको किसी और ने नहीं, सीटीओ ने उस मेल को पढ़ा। क्यों? क्योंकि एक एम्प्लॉय था जिसको ये मेल रिसीव हुआ, और उसने कहा अरे इस बंदे ने तो बड़ा कुछ करा है, अमेजिंग। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, टैलेंट की पूजा हर कोई करता है। इस बंदे में कुछ है ना, अगर मुझे ये लगा कि अरे इस बंदे में है कुछ, अरे ये तो फाड़ है यार, देन आई विल से अरे यार तुम आगे जाओ, तुम इस गोल आगे नहीं हो, तुम आगे जाओ। एंड एवरीवन गिव यू चांस। लोग कहते हैं अरे यार मुझे चांस नहीं मिलता। भाई तुम टैलेंट तो दिखाओ। हजारों लोग हैं जो तुम्हें ऊपर खींच लेंगे, हजारों लोग। तो ये चीजें मैंने देखी है। जस्ट शो योर टैलेंट एंड यू लव वट एवर यू आर डूइंग, दैट विल गो। Thank you, sir. Thank you. It was great talking to all of you, and I'm such honored. And I really believe कि first year को काफी help हुआ होगा इन सबसे, first, second, third year को even हमें. So अब जो conclude करना है वो निखिल and यशी, please conclude the meeting with the final words. Yes, so I would like to call upon the stage Mr. Nikhil Shrivastava. He will give a small vote of thanks to all of us. Thank you, Yashi. So basically, first of all, I would like to thanks the attendees of the session, especially of the viewers and the organizer of the and the backbone of the Tech Talk. Now, on the behalf of my college and entire management group here, I would like to thank our alumni for sharing their insight and graceful words with us in today's meet. I hope that our college continues to get this tremendous guidance and support from our alumni. Thank you, Dilip sir. Thank you, Chandan sir. And thank you, Subhandap sir, for having being with us. And thank you for this. Yes, thank Thank you you, so much, everybody. Nikhil sir. Okay, so with this, we come to the end of today's session. Hope you all have enjoyed and learned a lot from them. We really hope that these key points will prove to be really, really helpful for all of us in our future endeavors. Again, I, on behalf of PUSSGRC and Platform, would like to thank you all for taking out your valuable time to enlighten us on the topic. Thank you so much, everyone. Thank you.